Welcome to the Pavilion. मैं हूं Fakhr और आप देख रहे हैं Sports and Sports and the ARY Zap app. And the news out of Australia is that Sri Lanka have won their first Super 12 overs game. Here is the look at the match summary आपके सामने स्क्रीन पे. आयरलैंड ने पहले बैटिंग की, टॉस जीतकर पहले बैटिंग करने का फैसला किया था इन्होंने आज टारगेट सेट करने को. हालांकि इंटरेस्टिंगली अभी तक जितने दो मैचेस जीते पीछे उसमें आयरलैंड ने चेस किया था, सो मे बी दे शुड हैव चेस, बट दिस इज व्हाट हैपेंड. दे बैटेड फर्स्ट. They attacked her with a 45. Paul Sterling looked good for a while, but then just couldn't get the momentum that he wanted. 34 पे आउट हुए और बाकी आपके सामने बेहतरीन बॉलिंग परफॉर्मेंस श्रीलंका की तरफ से. श्रीलंका बैटिंग, Mendes there coming up with a wonderful score and doing really well for his team. So this is how it has gone down. 68 by Mendes, 31 by De Silva and 31 by Sri Lanka. Sri Lanka winning this very easily and making their way forward. Now we are getting ready for the big clash. It is India versus Pakistan out of the Melbourne cricket ground, the MCG, the action, the excitement. It is phenomenal. With me in the studios, I've got the two legends, the two icons. I've got Waqar Younis and Misbah-ul-Haq. And let's just get on with it right now. सबसे पहले तो चल के देखते हैं pitch report. Let's take a look at how the pitch is set in the MCG. One of the biggest games in world cricket is about to unfold. One of the greatest, meanest rivalries in the history of the game will be played on this ground, the MCG, one of the greatest stadiums the game has ever seen. 100,000 pairs of eyes in the ground, let alone all those ones with you at home, are going to be focused on the players but also on the playing surface. The ground dimensions here in Melbourne are always generous. You get big square boundaries either side in the upper 70s to the 80s. Down the ground you're looking at 79 to 80 metre hits as well, and opportunities to run twos and threes, which you often don't get in T20 cricket grounds around the world. I'm not going to elaborate on the actual state of the pitch because, to be honest, I haven't played on it for about 30 years, but there's a bloke next to me who's won a World Cup on it. He knows all about it. Michael Clark, it's all yours. Smitty, I think you're spot on. This is one of the greatest stadiums in the world. We've got some sun on our back finally, and I think it looks an absolute beauty. We come down, it's hard enough. It's got a nice green coverage of grass, so there'll be a little bit of pace and bounce for the bowlers, but it's rock hard. The MCG generally is a beautiful batting pitch. Once you get in, get past that new ball. So I think both opening batters might need to work a little bit hard if there's a bit of movement. But I think this is a great game for both. Win the toss. If I was playing or if I was captain, I'd want to put runs on the board. I'd want to bat first. जी हाँ बिल्कुल. What a great venue it is, and you could clearly see that both Smith and Clark also very excited about this game. मौसम के ऊपर बड़े सवाल थे. आपने देखा पिच रिपोर्ट में कि सूरज जो है वो निकल आया है. मौसम कुछ इस तरीके से कि 19 डिग्री सेल्सियस इस वक्त वहाँ पर टेम्परेचर है मेलबर्न में. फील्स लाइक 17. ह्यूमिडिटी थोड़ी हाई है मगर ओवरकास्ट कंडीशंस हैं. पिच आपने देखी वकार. विद दीज ओवरकास्ट कंडीशंस एंड दिस काइंड ऑफ वेदर, व्हाट शुड वी बी एक्सपेक्टिंग आउट ऑफ दिस पिच? Look, I think pitch looks really good. I mean, Clark, itni cricket khela hai, he knows how this pitch behaves. And we all feel and we can all see that you know, there's a bit of grass on the pitch, so there might be a little bit of sideways movement early on in the piece. So I think win the toss. I know Australian nature, the way they play their cricket, they will look to bat first. But I feel, you know, it's a kind of pitch where you might just do a little bit early on. So if Shaheen and Haris and all of them get in the game early, you never know, might get them out cheaply. Right. Misbah, green tinge in the pitch and looks rock solid as Clark was pointing out. Win the toss and do what here? I think even जो stats भी बता रहे हैं यहाँ पर कि last 5 मैच टीम चेजिंग जीती हुई है और इस किस्म की कंडीशन है. आपको ग्रीन ग्रास नज़र आ रहा है और टीमों को भी देखते हुए आई थिंक पाकिस्तान इज़ कंफर्टेबल अगेंस्ट इंडिया टू बॉल फर्स्ट, रिस्ट्रिक्ट देम एंड देन चेज इट डाउन. इंडिया भी यही सोचती है. इंडिया भी मुझे लगता है कि वो पहले बॉलिंग करने जाएंगे और बाद में उसको चेस करने की कोशिश करेंगे. तो मुझे लगता है बॉलिंग करनी चाहिए. बॉलिंग करनी चाहिए इस पिच पे. इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं शादाब खान. लेट्स लिसन इन. Shoaib Khan, well, what an occasion here at the MCG. Sellout crowd, India-Pakistan, for your first match of this World Cup.
How much are you looking forward to it? Bismillahirrahmanirrahim. Yeah, it's a big occasion. Every player wanted to play like on this atmosphere and showcase the talent on this ground, this atmosphere. Pakistan, India, big game. Everyone wanted to play that game, and hopefully everyone will enjoy that game. Now, you finally broke the hold that India had over you in World Cups in the last one, so you must be feeling pretty confident. Yeah, definitely, because last 3 games we won 2, so we are on the top against them. So, but as a team, we are playing well, and that's a more important thing because it's not an individual game. So as a team, you have to play well, and we are doing that. We'll talk about your bowling in just a moment, but you've been promoted up the top of the order in the top 4, and you've been very successful there. Are we going to see you there again this Yeah, evening? hopefully. I love batting top of the order because I done in a PSL. I performed there, and you know when you perform against the top quality side, like in a franchise cricket in a PSL, they have best bowling lineup in like a franchise cricket. So I performed there, and I have a full confidence, and hopefully when I get like a promotion in the top order, I will try my best to perform there as well. A lot of people are talking about the pace bowlers against this Indian batting lineup, but what about your own bowling? How effective do you think you're going to be on this pitch? Definitely, like in a T20 cricket, especially nowadays, modern cricket, everyone attack on a spinner, and leg spinner is always a wicket-taker option, and I will try to take wickets. So doesn't matter about the condition. Like as a profession, you have to perform in every condition. Shoaib, all the best for the match. We look forward to it. Thank you, sir. Thank you. Well, a lot of confidence there by Shadab Khan. Firstly saying that in the last 3 occasions, we won twice against India. Not just at the World Cup game, but, you know, overall in the last 3 games. So, वो confidence तो नज़र आ ही रहा है. मगर खुद कह रहे हैं कि मुझे अच्छा लगता है टॉप ऑफ द ऑर्डर जाना. मैं PSL में वहाँ पे खेलता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि मैं वहीं पे खेलूँगा. वकार. Well, that's a good thing. Confidence ही होना चाहिए. I mean, I'm not sure कि अगर वो खेलेगा नहीं खेलेगा, that's secondary. लेकिन ये है कि Shadab is full of confidence, and that's a very good, a big smile on his face. He just want to enjoy the occasion also. It's a big Colosseum kind of atmosphere there. So, you know, go out there, enjoy the game, and play to your best. And we are all back behind you and supporting you, and inshallah will come good tonight. Right, and with that, we've got Hardik Pandya, one of the most explosive players in the Indian side. Let's listen in. Hardik, your campaign begins today. MCG against Pakistan. It doesn't get much bigger than this. Not really. Quite exciting, but it's fantastic to play under such crowd and kind of atmosphere. You know, you kind of live for all these games and kind of you get jitters for this, but very excited. And you in particular have been very successful in Australia. How much are you excited about being back here? I have very fond memories. I made my T20 debut in Australia, and from there the journey has continued. So it's good to be back here, and you know it's a sporting country, right? So you can't get a better place to play a sport and kind of enjoy. And how's the body feeling at the moment? Are we expecting you to bowl a few overs today? Body is fine. I think we should put the topic on rest about my body or my overs. You will see me bowling. And everyone's talking about this contest between the Indian batters and the Pakistan bowlers. How much have you talked about it within the group? I mean, we all are aware that we are playing international cricket. It's not about Pakistan cricket, or it's not about Pakistan bowlers. You know, any team which you play, they're going to have some quality bowlers, and you know, it's an international cricket, right? It has certain standards. So, as batsmen, obviously, we all have spoken about how good they are, but at the end of the day, we all have worked very hard to come here, and a lot of people have scored a lot of runs. So, it's going to be at the end of the day, it's going to be a bowler who's going to bowl and a batter's going to bat. So, whoever does the well, going to win the contest. All the best this evening. Thank you. Thank you, sir. All right, there you have it, Hardik Pandya downplaying the question there that is it a contest of Pakistani bowlers against Indian batsmen. उन्होंने डाउनप्ले किया. उन्होंने कहा वो तो इंटरनेशनल क्रिकेट है, वहाँ पे तो यही होता है, अच्छी बॉलर हर तरफ होते हैं, उनके साथ खेलना होता है. देखें ऑब्वियसली जो एक्चुअल या ये मैच है वो उनको भी पता है कि कितना इम्पोर्टेंट है पाकिस्तान की बॉलिंग वर्सेस इंडियाज़ बैटिंग, क्योंकि उनकी बैटिंग ऐसी है कि वो किसी भी टीम को मैच से बाहर कर सकती है. एंड पाकिस्तान हैव दैट सॉर्ट ऑफ बॉलिंग अटैक. शाहीन अर्ली ऑन इस किस्म की बॉलिंग है कि अगर वो अर्ली विकेट्स लेंगे तो देन आई मीन गेम कैन स्लिप out of their hands. So it is going to be
गेम विद इन द गेम, पाकिस्तानी बॉलर स्पेशली नया बॉल शाहीन का और सामने इंडिया की बैटिंग. Yeah, and these conditions now, quickly, Waqar, tell me this. Humidity जो है वो 72% के ऊपर है. And आपको पता है humidity, पसीना आना शुरू हो जाता है, आपके हाथ गीले हो जाते हैं. How much does that affect in gripping the ball? And especially now that you've seen the surface, it has a green tinge in it. I don't think कि पसीने का कोई इशू या ह्यूमिडिटी का ये इशू होगा कि बॉल गीला होने का है. हाँ, अगर बाद में ड्यू फैक्टर आता है तो दैट माइट कम इनटू प्ले, बट ओवरऑल पसीने से नहीं इशू होगा, बल्कि ह्यूमिडिटी अगर हाई होती है कूलर वेदर में तो गेंद का साइंटिफिकली कहते हैं कि थोड़ा बहुत स्विंग होना चाहिए क्योंकि मॉइस्चर होता है हवा में. सो देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी दैट इट माइट गेट अ लिटिल बिट ऑफ स्विंग. तो अर्ली ऑन ऑस्ट्रेलियन पिचेस अगर बाउंस हुआ तो टू जस्ट गेट द राइट लेंथ, राइट लाइन, दैट इज गोइंग टू बी क्रूशियल. So here's my question to you: if you're batting first, what kind of total should you be looking at to posting? If I'm an Indian batsman, and I'll probably look to survive first 4 overs. If I don't lose any wicket, and then I can really push on and look to make maybe 170, 170 plus. But if I'm a Pakistani batsman, they're going to play their own way, get 50 on the board in the power play, and then move on from there. Win the toss and do what, Misbah? Bowl? Ball. Yeah. And how much do you think it restrict कितना करना चाहिए आप बॉल करते वक्त दूसरी टीम को? I think for Pakistan, keep All right, them we're going to below cut across to 170. the Melbourne cricket ground as both the captains are walking out, and we are ready for a toss. दोस्तों, MCG से खबर आ गई है. इंडिया ने टॉस जीतकर पहले बॉलिंग करने का फैसला किया है. सो फर्स्ट एडवांटेज टू इंडिया. दोनों टीमें 3 फास्ट बॉलर और 2 स्पिनर्स खिला रही हैं. शोएब, now how do we go about our business on this pitch after losing the toss and now being put into bat? आई गेस कुछ चेंज करने की ज़रूरत नहीं है. बाबर और रिजवान जैसे खेलते आ रहे हैं एंड दे हैव बीन वेरी कंसिस्टेंट एंड अभी भी कुछ चेंज करने की ज़रूरत नहीं है. द मैसेज शुड बी गिवन इन द ड्रेसिंग रूम, प्ले योर नेचुरल गेम और कोई भी टारगेट अपने माइंड में नहीं रखो. अच्छा स्टार्ट मिले तो खेलो फुल इंटेंट के साथ और पूरे यूटिलाइज करो 20 ओवर. राइट. 160, 170 का टारगेट बाबर ने बोला है अभी इंटरव्यू में रवि शास्त्री को कि विल बी लुकिंग एट 160, 170. डू यू थिंक दैट इज अ गुड अप्रोच टू सेट राइट टू गो विदाउट इवन सीइंग हाउ द बॉल इज गोइंग टू बिहेव नाउ? देखिए, मेरा नहीं ख्याल कि आप कुछ ऐसा टारगेट, एक मिनिमम टारगेट आप जहन में रखते हैं पिच को देखते हुए. अभी हमने स्टार्ट जब देखे थे तो 141 आ रहा है इसका, जो पिछली गेम्स हुई हैं एवरेज स्कोर आ रहा है मेलबर्न में. बट आई थिंक लुकिंग एट द इंडियाज़ बैटिंग, हमें इनिशियली तो हम 160 सोच सकते हैं, बट वी हैव टू स्कोर मोर क्योंकि ये कंफर्ट जोन है इंडिया का. और आप अगर थोड़े रन्स करेंगे तो दैन प्रेशर विल बी ऑन यू और आपके बॉलर्स पे प्रेशर होगा. इनिशियली वो आके उस तरीके से बॉलिंग नहीं कर सकते जिस तरीके से नॉर्मली वो पहले बॉलिंग में करते हैं. तो आई थिंक इनिशियली ओके 160, बट देन सी द कंडीशंस हाउ इट इज़. बट 15-20 रन एक्स्ट्रा करेंगे तो उसका आपको एडवांटेज होगा. वकार, ये पहला प्लेइंग 11 आ रहा है पाकिस्तान का इस वक्त बराह रास्त MCG से. टीम जो रिलीज़ हुई है आपके सामने, टेक अस थ्रू. Yeah, the top 3, Babar, Rizwan, we all know that how good they are. Shan needs to sort of kick on, and I think इस तरह की pitch पे the bounce of the pitch will suit him. And then of course Shadab, I'm not sure if he's going to bat at this number. Haider, Iftikhar, Nawaz, I mean, it's loaded with batting. And then Asif also. So that means Pakistan is playing 8 batsmen and then 3 pacers. So all-rounders उनको mix करेंगे बीच में और इससे आपके 8 बैट्समैन बन जाते हैं. एंड आई थिंक बैलेंस वाइज मे बी अ बॉलर शॉट एट टाइम्स, बट बैटिंग फर्स्ट दे गॉट टू रियली पुश ऑन, प्ले पॉजिटिव. Yes, and Naseem we also have, he can also bat. Rohit, Rahul, Virat, Shoaib, take us through the Indian squad. रोहित, राहुल, विराट उनके मतलब बैकबोन है. सूर्य कुमार यादव, हार्दिक पांड्या, कार्तिक, अक्षर पटेल, क्योंकि जडेजा इंजर्ड हैं तो इसलिए अश्विन, मोहम्मद शामी, कुमार और अर्शदीप. तो उनकी बॉलिंग जो है वो बुमराह के ना होने की वजह से ऐसी है कि आप मतलब अच्छे रन्स लगा सकते हैं बोर्ड पे. Yeah, that's a strange inclusion, Ashwin instead of the leg spinner. So I think they have just gone through the stats. लेग स्पिनर को बट वैसा सक्सेस रेट नहीं मिला कि वो ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि मिडल ओवर्स में जो है विकेट्स लेके देंगे, तो इस वजह से आई गेस वो एक्सपीरियंस्ड आदमी को लेके आए हैं. और
don't forget side boundaries. And I think the stats, spinner के stats better हैं यहाँ पे. डेटा जो है That's वो why suggest करते I हैं। think. दूसरा ये बाउंड्रीज की बात कर लेते हैं। एमसीजी की बाउंड्रीज तो स्क्वायर भी बहुत बड़ी हैं। दे आर नॉट लाइक होबार्ट और नन ऑफ दीस प्लेसेस, सो देयर इज गोइंग टू बी अ लॉट ऑफ रनिंग बिटवीन द विकेट्स रिक्वायर्ड हियर। बिल्कुल, और साथ में मेक श्योर करें कि अगर आपको इनफ टाइम मिला एज अ बैट्समैन, आप प्लेस कर सकते हैं बॉल को। वो मोस्टली स्पिनर्स को आपको ज़रा ज़्यादा टाइम मिलता है, तो गैप्स में खेलें और कोशिश करें वो जो 2 रन्स हैं वो हो। अगर आपको बैट बॉल भी मिले तो उसे भी कोशिश करें, स्पेशली जो शॉर्ट बॉल आता है उसे भी गैप्स में खेले, जो बड़ी पॉकेट्स हैं। Yeah, and for the Indian bowlers, what would be their strategy today? वेल उन्होंने पाकिस्तान की बैटिंग को देखा होगा, बड़े क्लोजली देखा होगा, न्यूजीलैंड में अभी सीरीज़ में भी देखा होगा, और ऑफ कोर्स उन्होंने इस ग्राउंड को भी देखा है कि स्क्वायर बाउंड्रीज भी बड़ी हैं, इवन सामने भी इतनी छोटी बाउंड्री नहीं है। सो यू नीड टू रियली हिट अ बिग वन टू क्लियर दोज बाउंड्री फॉर अ 6। सो उसके लिए जैसे मलिक ने कहा है ना कि यू हैव टू रियली रन हार्ड, एंड ऑल्सो व्हेन यू प्लेइंग योर शॉट्स यू गॉट टू मेक श्योर दैट यू डोंट प्ले इन द फील्डर्स हैंड, बिकॉज बड़ी फील्ड में कई दफ़ा आप on a rising deliveries you play over the top and it can really be, you know. Let me take that question to you as well, Shoaib. What would be the Indian bowler strategy, or should be the Indian bowler strategy bowling to Pakistan on this pitch? आई गेस हम लोगों ने देखा है, स्पेशली उनके जो कुमार हैं, भूवी जिनको हम उनका प्यार से नाम लेते हैं, उन्होंने, मैंने देखा कि उन्होंने रिजवान को आउटसाइड ऑफ स्टम्प आगे बॉल करने के लिए आगे बॉल किए। एशिया कप में भी हमने देखा तो उन्होंने थोड़ा सा स्ट्रगल किया उस लाइन और लेंथ पे। तो आई गेस वो जो रिजवान है उनको वो वही टारगेट करेंगे मोस्टली, इवन रेस्ट ऑफ द बॉलर्स, और बाबर को वो कोशिश करेंगे कि एक ऑड बॉल बाउंसर करें, जो कि एशिया कप में उन्होंने किया भी था अच्छी जगह पे बॉल करते हुए, और फिर एक सरप्राइज़ बाउंसर किया। तो मेरे ख्याल में यही प्लान होगा, और थोड़ा सा हम लोगों ने घास भी देखा है पिच पे, तो वो यूटिलाइज़ करने की कोशिश करेंगे, वो एक गुड लेंथ पे जो है बॉल को सीम अराउंड करने की कोशिश करेंगे। So let's suppose Misbah Pakistan sets a total of 165, 170. Then how do the bowlers go about their business against the Indian batting? I think पाकिस्तान के लिए बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड है। पाकिस्तान के लिए स्पेशली शाहीन is going to be very important, हारिस रऊफ भी important होंगे, नसीम शाह। नया बॉल बहुत important होगा आपको, क्योंकि इंडियन their टॉप ऑर्डर इज़ लाइक, उनकी जो टीम है पूरी उसके ऊपर बेस करती है। रोहित शर्मा, केएल राहुल, विराट कोहली, सूर्य कुमार यादव, ये चारों के चारों ऐसे प्लेयर हैं कि आपको कम से कम अर्ली ऑन इनमें से 2 को आउट करना, उनको अंडर प्रेशर करने के लिए। स्टिल इट्स नॉट दैट ईजी आफ्टर दैट, बट एटलीस्ट जो पहला पंच है आप उनको ऐसा मारें कि जिसके बाद आपके बाकी बॉलर वो अंडर प्रेशर हो, देन यू कैन बेसिकली डिफेंड दिस। मुझे लगता है कि अगर ये निकाल गया तो फिर कोई स्कोर भी सेफ नहीं है उनके साथ। ये हो जाएगा। वकार, इंडिया पाकिस्तान गेम ऑलवेज अ हाई प्रेशर गेम फॉर द प्लेयर्स, एक्सक्यूज मी, बट नाउ 1 लाख लोग जो हैं वो स्टेडियम में मौजूद हैं, बार बार सब उसके बारे में बात कर रहे हैं। How much pressure does that add? And how do you calm your nerves in a situation like this? Yeah, it's a tough one. It's a very difficult thing to do. Unless or until पहला ball नहीं deliver होगा, there'll be pressure. There'll be, you know, nerves. There'll be butterflies in your stomach. यहाँ पहला ball होने के बाद, I think it'll be a different ball game. They will be, they'll be up there, roaring. They'll be up there going, and good to see, Pakistani crowd. They're coming the in. fans. Even the Indians. I mean, there are a lot of Indians there in Melbourne. Yes. So don't forget. So it's going to be like, it won't be 50-50. It'll be something like 70-30. Yeah. But yeah, Sydney से भी बहुत सारे लोग गए हैं. Half of my family has gone there to watch that, to support. So I know people who've flown in from all over the world, or as far out as the United States, England, Singapore, Pakistan, who have gone there to witness this game. That is the importance of a Pakistan-India match. That is the passion. That is the fanaticism about seeing a game like this. For you, it gets a little complicated at home. Not really. Not really? Yeah. So you do have defined sides at home? Defined the roles. I don't even remember when we even discussed this India-Pakistan match. Right. But of course, she's from India. She wants India to win. Or I'm a Pakistani. I would want to see Pakistan win, inshallah. बिल्कुल, और ये आपके सामने स्क्रीन पे विजुअल्स आ रहे हैं एमसीजी के दोस्तों, and you can see that it's almost already full. There's still people coming into the ground. There are people on the outside with ticket holders. It is a sold out venue,
and it is just buzzing right now. Misbah, just tell us, I mean, you've played in situations like this. How does it feel when something like this is going on? आपको अंदाज़ा हो ही गया होगा टॉस पे कि वो बिल्कुल करीब हो के भी एक दूसरे की बात सुनने की कोशिश कर रहे थे. अभी तक ये फुल नहीं हुआ पूरा ग्राउंड, अभी लोग आ रहे हैं, तो आवाज़ नहीं आ रही थी, ना बाबर को आ रही थी और ना रवि शास्त्री को आवाज़ उनकी जा रही थी. बिल्कुल यू कैन इमेजिन कि किस किस्म का यहाँ पे एटमॉस्फेयर होगा, और स्पेशली ऐसी सिचुएशन में आई थिंक इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट फॉर द कैप्टन स्पेशली. फील्ड में कोई पता नहीं चलता, फील्डर अगर वो खुद नहीं देख रहा उस टाइम पे कि क्या हो रहा है, एंड देन रनिंग बिटवीन द विकेट कॉल करना है, आई कांटेक्ट करना पड़ेगा आपको, otherwise you have no idea what's happening in the ground. And especially Waqar in MCG, where a lot of twos will be run, a lot of calls are going to be made with a roaring crowd like that. It's going to get a little complicated for the batters to communicate. I'm sure it will be. I mean, you have to really be on your toes throughout the game. Not sirf running between the wicket, even the most important bit is going to be the fielding. Fielding में you have to really be very, very alert and make sure जब batting कर रहे थे and don't play too many dot balls. I mean, boundaries they will come, twos and threes, but singles are going to be very, very crucial also. So, you know, can't wait for the game to start. So it's going to be a real big one. Yes, and we are joined by Wasim Akram now, and interesting. Please, Wes, come on in. We've been waiting for the legend himself. Wasim Akram is here. Finally. I'm okay. Whatever. तू बैठा रहा, comfortable नहीं है वहाँ पे? आपको माइक लग गया है बिल्कुल? Yes. Yep. All right. The action in a live broadcast. India has won the toss and elected to bowl first. जी बिल्कुल, I saw, and I also saw the pitch report. Yeah. What do you think? A bit of tinge of grass, they said, on the pitch, and I think it's kind of a good toss to win for India, unfortunately. But अब toss हार गए हैं, क्या कर सकते हैं? I suppose you go out and try to not see off the new ball, at least don't lose wickets in first 6 overs, because ball will seam around overcast conditions, and you know, try to have not lose wickets and get to certain total where you can defend, because bowling is good enough on this pitch. Yeah. Well, what do you think is a defendable total here for us? I suppose this सबसे lowest ground है ऑस्ट्रेलिया की. You know, total में 140 plus कोई है. Ideally, I would like to see 155 to 160. Ideally, and I think to defend with Pakistan's bowling. India has interestingly brought in Ashwin. हाँ बिल्कुल, वो अश्विन को लेके आया है चहल की जगह, और शामी भी टीम में आया है. शामी कैन बी डेंजरस बिकॉज वो हर दफ़ा आके सीम मारता है, और अदर वुड हैव सीन कि वो दूसरे को खिलाते हैं. हर्षल क्या नाम है, वो स्लो बॉल में बहुत करता है. नहीं, हर्षल पटेल या अर्शदीप भी, हाँ वो खेल रहा है, बट जो नहीं खेल रहा शामी उसकी जगह. हर्षल पटेल नहीं है, हाँ, ही इज नॉट इन द टीम. शामी उसकी जगह आया, और शामी सीम अच्छी मारता है आके, और वो उसको इसलिए खिलाया कि आई थिंक फिंगर स्पिनर्स का जो स्टैट देखा, वो जो हम आज पिछले हफ्ते से जिक्र कर रहे हैं कि इस ग्राउंड ऑस्ट्रेलिया में सो फार finger spinner का economy rate, strike rate is better than the wrist spinners. Yeah, there you have it. Mohammad Shami, Akshar Patel, Vishnu Kumar, and quickly, who has a advantage in fielding? When you look at these two teams, Shoaib, who do you think is a better fielding side right now? I guess more or less same ही है. दोनों teams में अच्छे fielders हैं, और ये है कि utilize of your good fielders, that is what matters. क्योंकि ऐसा कोई नहीं है कि दुनिया में जो सारी टीम्स हैं 11 के 11 बहुत अच्छे फील्डर्स हैं, बट येस कुछ ऐसे एरियाज हैं, स्पेशली अगर इस ग्राउंड पे जो स्क्वायर ऑफ द विकेट है वहाँ पे आपको बहुत अच्छे फील्डर्स चाहिए. अच्छे फील्डर्स so far जो देखा है कि दिस ग्राउंड इज लिटरली 80 ऑल ओवर, ऑलमोस्ट 80 चारों तरफ है. Look at this crowd. Look at the crowd. Yeah, it's just remarkable. These images coming out live from the MCG. People are still coming into the ground right now, but it is just absolutely electrifying. This is what the World Cup does. This is what an India-Pakistan game is all about. And everybody who's spoken this morning, whether it's Ian Smith, whether it's Clark, everybody's saying this is the game, the biggest cricketing contest I think for on the planet. Australians, this day and age, they witnessed this once in 2015, जो Adelaide में match हुआ था, although that game was a buzzkill, because India won comfortably. But I hope that today is different. But again, it's a huge
change for Australian cricket lovers to see that much passion and obviously noise. I think ICC ने realize किया कि Adelaide छोटा पड़ता था इस match के लिए. I was there. I think you were there. Okay, guys, I'm going to interrupt you guys. We have to go cut across to MCG where the game is about to get started and things are they're almost starting off. We'll see you on the other side of the game. Good luck to both the teams.